Okay, children, now we will be going to your page number 80, which is getting around big cities. Getting around big cities यानी बड़े शहरों में घूमने फिरने के लिए क्या क्या यानी कैसे आप घूमते फिरते हैं, राइट? डू यू लिव इन अ टाउन और अ सिटी? क्या आप किसी कोई कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू ट्रेवल अराउंड योर टाउन और सिटी? आपके शहर में इधर उधर जाने के लिए छोटे कस्बों में क्या होता है, टांगा चलता है, सुजुकियाँ चलती हैं, रक्शे चलते हैं, बड़े जो शहर होते हैं उसमें फिर बसें चलने लग जाती हैं, फिर उससे भी जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आजकल मेट्रो चलती हैं, ठीक है। एंड जो बहुत दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच में अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी चलती हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट वे, विच इज़ द फास्टेस्ट, विच इज़ द चीपेस्ट? इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी तो आपका फास्टेस्ट वे तो जो होता है कार होता है, ठीक है। बट द चीपेस्ट इज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस वगैरह होती है, वो दैट इज़ द चीपेस्ट, राइट? अभी नाउ we'll do the word study, ways of traveling. Which of these ways of traveling did you talk about in activity 1? ये अभी जो है ना, पुट द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये यानी आप लोगों ने कौन कौन से जो है ना वेज ऑफ ट्रैवलिंग देखे थे? आपने मोटर बाइक पे, बस पे, एंड यू ट्रैवल्ड इन, आपने बात की कि जी अंडरग्राउंड पे, और फिर उसके बाद ट्रेन पे, और देर बहुत सारी चीज़, रिक्शा पे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वी डिस्कस्ड। And now we will be doing what is that put the methods of transport into these categories, add at least two more to each list, by land, by air and by water. हम पहले तो हम देखते हैं ना, पहले हम जो इसके बीच में है ना वो तो हम करके देखते हैं, फिर मैं उसको आपको ज़बानी बता दूंगा, आप फिर उसके बाद उन दोनों चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, ठीक है ना जी? से हम कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ें जो है, पहले तो इनको हम प्लेस करते हैं कि बाई लैंड इनमें कौन सी चीज़ें हैं, बाई एयर कौन सी हैं, और बाई वाटर कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है बाई लैंड में, इसमें जैसे लिखी हुई है कार, बाइक और ट्रैम, ठीक है। बाई एयर में प्लेन और हेलीकॉप्टर, बोट एंड फेरी, राइट? बोट एंड फेरी। अब बोट एंड फेरी के अलावा शिप भी हो सकता है, स्टीमर भी हो सकता है, ठीक है। शिप, स्टीमर, ठीक है। देर कैन बी टू थिंग्स, मोटर बोट और स्टीमर, और देर कैन बी ए शिप, देन देर कैन बी ए सबमेरीन, राइट? इसी तरह प्लेन, हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद बैलून्स होते हैं, ठीक है, बाई एयर ट्रैवल करने के लिए। और फिर रॉकेट्स भी होते हैं कि जिन पे लोग सफ़र करते हैं, राइट? हेलीकॉप्टर भी हो गया, प्लेन भी हो गया, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद जेट्स हो गए और बैलून्स हो गए। इसमें ये आप ऐड दो कर सकते हैं। इसी में से और चीज़ें जो मैंने करके अलग की हैं कि जो बाई लैंड वाली जो हैं वो क्या क्या हैं, कि बस, ऑन फुट, टैक्सी, मोटर बाइक, राइट? इवन आप अंडरग्राउंड को भी कह सकते हैं, ये लैंड वाली हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एयर वाली में दो चीज़ें ऐड कर लेनी है, कि बाय रॉकेट, बाया रॉकेट, और बाया एयर बैलून, राइट? एयर बैलून से भी आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे लोग, पीपल ट्रैवल। इसी तरह बोट, फेरी, शिप, हाँ, स्टीमर, सबमेरीन, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ओके। अब एक जो दूसरा इसमें पार्ट है वो ये है कि आप नीचे डायरी वाला था, कि जिसमें आपने फादर की एक डायरी है, उसमें कुछ मिसिंग है, तो आपने गेस करना है क्या क्या चीज़ें। जैसे दिस इज़ द दीज आर द नोट्स दैट फ्रॉम योर फादर्स डायरी। The Natural Dash Museum, Wonderful Life Dash, Underground Dash, Underground South, Kensington. From there, dash to museum, about dash minutes. Go out of house, turn right and walk across the road. Turn dash after the post office, walk up that street. The entrance to the dash is on the right. अभी हम गैस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, एक जैसे न्यूयॉर्क में है, तो अगर योर फादर इज़ इन न्यूयॉर्क तो वी मस्ट हैव रिटन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। फिर उसके बाद हम कहते हैं वंडरफुल वाइल्ड लाइफ ज़ू, राइट? अंडरग्राउंड साउथ कैंसिंगटन, ठीक है जी। फ्रॉम देयर वॉक टू म्यूज़ियम अबाउट 4 minutes, राइट? Or go out of the office, turn right and walk across the road, turn, again we say turn left,
turn left. After the post office, walk up that street. The entrance is to the entrance to the building is on the right. So ये these can be the, आपने guess करने हैं words can be anything, मगर आपने guess करने हैं, आपको सिखाया जा रहा है कि how to guess के जी कौन कौन से words जो है ना use हो सकते हैं. ठीक है जी. अब हम एक्चुअल पार्ट पे जाएंगे, जो एक्चुअल हमारा आगे वाला है, कि जिसमें हमने एक पैसेज पूरा लिखना है और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जी कैसे उस पे हमने हाउ टू गो इन दैट पैसेज. ये अभी एक आपको एक और भी दी हुई एक्सरसाइज के जी, जिसमें ये एक पहले बताया हुआ कि अल्काट्राज में अगर आप आइलैंड में हैं तो आप कैसे करेंगे, लैंग्वेज डिटेक्टिव्स भी आपको दिए हुए हैं. फिर आपको ये बताया गया कि आप कराची में हैं. मैं आपको थोड़ा सा ये इसकी गाइडलाइंस दे देता हूँ, वो आपको फिर थोड़ा सा करना पड़ेंगे. एच मीन्स होटल, राइट. तो अगर आपके को गेस्ट्स आ रहे हैं फॉर 2 days टू कराची एंड दे आर स्टेइंग इन ए होटल, यू हैव टू प्लान अ विजिट फॉर देम कि जी आपने कहाँ कहाँ जाना है, एंड हाउ फ्रॉम here you can go there and go out of the door, and on the left right we walk across the road street, walk towards the beach, mosque, the entrance to the car park, stop. ये सारे डायरेक्शन देने के तरीके होते हैं. prepositions for, these are the prepositions for the directions giving, right. So अब अभी आपने एक प्लान करना है. मैंने आपको एक छोटा मैं एनलार्जमेंट करके दिखा देता हूँ इस नक्शे की. ठीक है, ये एनलार्जमेंट है. यू कैन से कि जी ओके, आप उसमें लिखेंगे यू विल बी स्टेइंग इन दिस होटल, एंड इफ़ यू हैव टू गो टू दी म्यूज़ियम, you have to get out of your hotel, you have to turn right, and then you will walk for about at the main road you will again turn left, and on the crossing you will turn right, and there you will find the museum. Or you can tell them कि if you get out and if you take your car and you can travel up to the Mizar-e-Qaid, and you will get there in so many minutes. So this is the way of giving directions, right. This is the way this is a bus stop, right. This is the sign of a bus stop. Here is the car parking, right. Here people are not allowed to, and so many things they are given. With the help of that you can give a presentation in your class. Okay, that is why I have separated all these things so that you can prepare very easily. This you will have to do yourself, and you will prepare, and then you will, if you have a problem, then you will come to me and tell me. Okay, now this is a very important part, that is one giant leap. Talk about it. What do you think people want to travel in space? What qualities, skills do you think astronauts need? I'll take all these questions one by one, and then we'll solve these questions. Okay. Okay, children, now I want you to listen to what I am going to read very carefully, right? Just keep quiet and listen to what I'll say. Okay. One Giant Leap, the story of Neil Armstrong. Paragraph A. At 2:56 on 21st July 1969, Neil Armstrong became the first man in the history to walk on the moon. He immediately sent a broadcast back to Earth, and millions of people heard his message. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. But despite his huge achievement, Armstrong was a modest and private man who did not think of himself as a hero. Neil Armstrong was born in 1930 in Ohio in the USA. When he was six years old, his father took him on his first flight, and he loved it. His love of flying began. He learned to fly a plane when he was 16 and later became a pilot
for the US Air Force. Paragraph C. In 1962, he trained to become an astronaut. Armstrong was perfect for the job. He was a skilled and experienced pilot and physically fit. He also had the ability to stay calm in a crisis, and later this helped to make the moon landing successful. Just before landing, huge rocks suddenly appeared before the spacecraft. Armstrong had to quickly steer it away to avoid a crash. The spacecraft landed safely and the history was made. After that, Neil Armstrong became world famous, but he didn't enjoy the fame and wanted to live a normal life. However, the world always remembered him as the first man on the moon. When he died in 2012, President Barack Obama said he was among the greatest of American heroes. Okay, now we are going to do all these questions. We are solving of all these questions. I'll take the questions one by one, and then we'll try to reply all these questions. So, first question is, why do you think people want to travel in space? What qualities and skills do you think astronauts need? Right? It is a great honor to travel in the space. An astronaut has to be physically fit, has to be a skilled pilot, should have the ability to stay calm in crisis. Okay, so this is the suggested answer. You may have a different answer, but this is one of the suggested answers that I have given you, right? Then next, read the text quickly, check your ideas from activity 1. What was Neil Armstrong's great achievement? He was the first human to land on the surface of the moon. This was his greatest achievement. Okay, now the third question is that read the text again. Why are these dates important? 1969, 1962, 1930, and 2012. We have read this text, and now we'll write that why these dates are important. In 1969, Neil Armstrong landed on the moon. In 1962, he trained to become a astronaut. Right? In 1930, he was born, and in 2012, he died. Okay, the next question, which is question number 4, that match the descriptions with paragraph A to D in the text. Neil Armstrong's life after his great achievement, the great achievement that made Neil Armstrong famous, Neil Armstrong's early life before he became famous, and the background to Neil Armstrong's great achievement. We have read the paragraph A to D. Now we'll see that what all is given in paragraph A and B and C and D, right? In 1, D, in Neil Armstrong's life after his great achievement, after that Neil Armstrong became world famous, but he didn't enjoy the fame and wanted to live in the so blah blah blah, right? And in the second is the great achievement that made Neil Armstrong famous. What was the great achievement? That he landed on the moon. This is given in the paragraph A, right? And third is Neil Armstrong's early life before he became famous. This is the early life, that when was he born and where was he born, and once what he did once he was 6 years old. And the last is the background of Neil Armstrong's great achievement. In 1962, he trained to become an astronaut, or blah 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 blah. Yeah, this all is given. So this is the background to Neil Armstrong's great achievements, right? So we have completed this now page. Okay. So I hope you liked our lecture. Please do subscribe us if you like our lectures, और हमें आपकी जो लाइक्स मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है. अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया कीजिए कि हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं काम,
और उनसे उनका फ़ायदा भी हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।